Hi everyone, welcome to our next video in A to Z series for RBI Grade B. In this series, we are discussing each and every aspect of RBI Grade B so that your preparation becomes easier and you get all your queries answered at one place. So till now in this series, we have discussed D for decoded syllabus. In the earlier video, which was part 1 of decoded syllabus, we discussed the syllabus for phase 1. In this video, which is part 2 of decoded syllabus, we will discuss the syllabus for phase 2. If you want to watch all these videos in this series, you can access that through the playlist of this series, which is given in the description of this video. There is a link to this playlist. Why to watch this video? देखिए आपके notification में there is a mention of syllabus. You might think that since syllabus is already mentioned, why should I be watching this video? The reason is that there are a lot of questions which are not directly from the syllabus that is mentioned in the notification, or maybe you will not understand that these kind of questions has also come if you read the syllabus. तो वो क्या questions है वो मैं आपको बताऊंगा. Moreover, huge part of your phase 2 paper is based on current affairs, and current affairs directly has no mention in your syllabus which is given in the notification. So exactly इसका क्या scope है, क्या आता है, वो हम discuss करेंगे. ठीक है. और ये आपको चीज समझनी पड़ेगी जो मैं अभी आपको समझा रहा था कि जो आपका सिलेबस है जो नोटिफिकेशन में मेंशन्ड है, इट इज जस्ट इंडिकेटिव, इट इज नॉट एग्जॉस्टिव. ऐसा नहीं है कि उसमें अगर एक वर्ड लिखा है बट उसी पे क्वेश्चन आएगा. क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड रिलेटेड टू दैट कॉन्सेप्ट in another area also. I'll explain you how, right? So एक नोटिफिकेशन में मेंशन्ड है जो हमारा बेस है, एक एक्चुअल सिलेबस है विच आई एम गोइंग टू टेल यू बेस्ड ऑन माय अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रीवियस ईयर पेपर्स. तो हम एफएम का सिलेबस डिस्कस करेंगे, ईएसआई का, एंड देन डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश का. Let me start with FM. So FM is a combination of two subjects, management and finance. Both contribute around 50 marks to this paper, which is of overall 100 marks. ठीक है, there is no rule, but overall 50-50 का ही आता है. Let me start with management first. So if I go by the syllabus of management which is given in the official notification, it is this one which is there on your screen right now. The portion which I have highlighted in yellow indicates the main chapters. So if I just pluck out these portion which I have highlighted in yellow, these becomes your main chapters. Motivation, leadership, communication, journal management, emotional intelligence, personality and perception, conflict, change and reinforcement, corporate governance and ethics. So this is pretty clear from the syllabus that what you would have to read under these chapters, because for every chapter they have given subheads also. For example, under motivation they have given concept, content theories, they mention the name of theories here. Then they mention process theories, they mention the name of the theories here. So they have given you some subheads also. But here is why the problem starts. You cannot just rely on what is mentioned in this syllabus. You cannot take this to be 100% complete. I'll give you an example. Suppose कीजिए you are reading the motivation chapter. You are going by this thing which is given in the syllabus. You will read the following content theories: Maslow, Eldorfer, McClelland, Herzberg. ठीक है. But if you see in the exam, the theory that was asked was theory X and theory Y. This is not mentioned in your syllabus here anywhere. You can pause this video and check. Similarly, if you go by leadership, they've just mentioned theories, and under that they mentioned contingency. They've not mentioned what all contingency theories. So you cannot just read the basic concept of contingency and assume that theories will not come, because in the exam, if you see again, they have asked a question on leadership, right? Contingency theory of leadership, and they have asked this question on Fiedler and house path goal theory. ठीक है. And similarly, if I give you one more example, corporate governance, they mentioned factors affecting corporate governance, mechanisms of corporate governance, but nowhere they have mentioned that theories of corporate governance can also be asked. But if you see, there has been a question in your previous year papers, identify the theory of corporate governance which is based on certain parameters which is mentioned in the question. So the question is on corporate governance theory, but theories are not mentioned in your syllabus. So again, I'm trying to just reiterate the point that syllabus is indicative, it is not exhaustive. Just don't go by what is mentioned in the syllabus. अपना दिमाग लगाओ, questions को देखो, उसके बाहर भी पढ़ो. Now let's move on to the finance part. अब finance में, if this is of 50 marks, first of all, the overall weightage out of this 50 marks is around static
50, current 50. This is, I would say, a kind of a general thing I am saying, but overall, if you see over the years, weightage of static is decreasing and current is increasing. So we can also say 40-60 if I take into account the next year papers, because this has been the trend. ठीक है, अब इस 50 marks को I can divide into objective 25 marks and descriptive 25 marks. In the objective part, static and current almost have same weightage, but again, I would say static can be little less and current can be little more, 10 to 15. This can be 8 to 10, because this is the trend. But abhi ke liye, because you cannot predict what can happen, let's take it static 10 to 12 marks, current 12 to 13 marks. Descriptive mein over the past 2-3 years, we have seen that current has a more weightage around 15 marks, whereas the static has a less weightage of around 10 marks. ठीक है, तो overall objective में भी you can see current has a more weightage. In the descriptive also current has a more weightage. That is why I am saying के the weightage of current is more now as compared to static in your finance paper. सबसे पहले if I want to tell you the syllabus of the static portion which is asked in your subjective paper and descriptive paper. So this is what is mentioned in the official notification. The first thing that you need to take into account that here they have mentioned subject as journal finance. Now they have put it specifically. There is no such subject as journal finance. Why they have put it specifically? Because there are many people who are not from finance background. They think that they are not eligible for RBI Grade B because they will not be able to read finance as such. So for them they have specifically put that you can also do this paper, give this paper, get selected in this paper because this is journal finance. ठीक है, तो थोड़ा confidence ले लो. Now they have divided the whole syllabus into 3 units: financial system, financial markets, and journal topics. This is all random. This doesn't make much sense to me. Financial system में mainly we study about various financial institutions, जिसमें Reserve Bank आ जाएगा, SIDBI, Exim, NABARD, NHB, NAFED. Non-banking system will also be part of this. So Bajaj Finserv, Muthoot Finance, all these are non-banking NBFCs. But then some random topics have been put into the financial system like IT in banking, digital payments. But anyways, you would have to do it. Then there is a topic financial markets. So market is where you buy and sell currency, bonds, equity. So it is of two types, primary and secondary. And here you can trade. Forex means currency, money and bond means debt instruments, equity means stocks. तो ये सारा आपको समझना है. And then there are some journal topics which are again random. It is not any logical grouping. Risk management, derivatives, financial inclusion, budget, inflation, just all random I would say. ठीक है, तो ये सारा syllabus है आपका. But the main point is journal finance that you need to understand. ठीक है, और questions भी journal ही आते हैं. Now moving on to the current part here. ठीक है, अब करंट अफेयर्स में क्या आता है? इन दी नोटिफिकेशन इफ यू सी देयर इज नो डायरेक्ट मेंशन ऑफ एनी करंट अफेयर्स. यहाँ पे कहीं भी नहीं मेंशन है कि क्या करंट अफेयर्स आ सकते हैं, क्या स्कोप है. सो बेस्ड ऑन द प्रीवियस ईयर पेपर्स, इफ आई वांट टू टेल यू द करंट अफेयर्स फॉर द ऑब्जेक्टिव पार्ट, दिस पार्ट, ऑब्जेक्टिव पार्ट, these are the current affairs. ठीक है, I would say some journal finance current affairs where you would have to read RBI notifications, SEBI notifications and news related to Ministry of Finance. ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने कोई सर्कुलर निकाला है, कोई नोटिफिकेशन निकाली है, सेबी ने निकाली है, आरबीआई ने निकाली है, उनके रेगुलेशंस जो नए नए आ रहे हैं वो आपको पढ़ने हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ देयर इज एनी करंट अफेयर रिलेटेड टू your phase 2 topics, whatever phase 2 topics we have in the syllabus that we just discussed, such as digital banking, financial inclusion, stock market, risk management, उससे related भी कोई development है, they can ask you. Then they can ask you on questions, they can ask you questions on schemes related to Ministry of Finance, जैसे कि प्रधानमंत्री जन धन योजना. This is initiative of Ministry of Finance. I think प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना. This is again initiative of Ministry of Finance. These kind of schemes have also been asked in your previous year papers. Then there are certain reports which are very very important. Economic survey and union budget. They are especially very important if their release date is closer to exam, say within 2 to 3 months of your exam date. अगर उससे पुराना है तो शायद कम important होगा. Financial stability report by RBI,
annual report by RBI, currency and finance report by RBI, ट्रेंड्स एंड प्रोग्रेस इन बैंकिंग सेक्टर बाय आरबीआई. ये कुछ रिपोर्ट्स हैं जो आपको जरूर पढ़नी है. आई ऑल्सो शो यू फ्यू क्वेश्चंस जो यहाँ से आए हैं. और जो ये रिपोर्ट्स हैं, आई एम नॉट टेलिंग यू रैंडमली, दिस इज अगेन mentioned as reference material in your notification. If you go to the RBI notification under suggested reference material for finance, they mention most of these reports: economic survey, RBI annual report, trends and progress, currency and finance, जो मैंने यहाँ पे बताई हैं. And they've also mentioned material source from RBI website which includes RBI notifications. ठीक है, तो ये रैंडम नहीं है, बहुत एनालिसिस करके आई एम टेलिंग यू दिस syllabus, decoded syllabus for phase 2, and you can even see there have been questions asked on these lines. तो एक क्वेश्चन आया था, there was a notification by SEBI on issue of debt securities using UPI. तो ये SEBI की नोटिफिकेशन में से क्वेश्चन आया था जिसका आंसर UPI था. तो SEBI notifications are also important. Earlier they used to ask mainly from RBI notifications, but they are now asking you from SEBI notifications also. और नेक्स्ट इज अबाउट द करंट पोर्शन इन योर डिस्क्रिप्टिव पार्ट. ठीक है, अब डिस्क्रिप्टिव पार्ट में जो करंट अफेयर्स हमने पढ़ने हैं, दैट इज मेनली टू अंडरस्टैंड दैट डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी करंट अफेयर्स बेस्ड हो सकते हैं. एक तो थ्योरी वाले हो सकते हैं, एक करंट अफेयर्स बेस्ड हो सकते हैं. अब इसके लिए द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू रीड इज एडिटोरियल्स एंड द सेकंड इज रिपोर्ट्स, द सेम रिपोर्ट्स दैट आई जस्ट टोल्ड यू टू रीड फॉर द ऑब्जेक्टिव. ये वाली रिपोर्ट्स जो मैंने बताई थी आपको ऑब्जेक्टिव के लिए, द सेम रिपोर्ट्स नीड टू बी रेड फॉर द डिस्क्रिप्टिव. और मैं आपको दिखाता हूं, देखिए जैसे ये क्वेश्चन आया था, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन वैल्यू इन्वेस्टिंग एंड ग्रोथ इन्वेस्टिंग. दिस वाज फ्रॉम द एडिटोरियल्स इन इकोनॉमिक टाइम्स. तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि एडिटोरियल्स आप जरूर पढ़ें. सिमिलरली व्हेन आई टॉक अबाउट रिपोर्ट्स, ठीक है, ये यूनियन बजट मैंने लिखा है अंडर रिपोर्ट्स. यूनियन बजट से इसी साल क्वेश्चन आया था आपका, डिस्कस 5 की डिजिटल इनिशिएटिव्स इंट्रोड्यूस्ड इन यूनियन बजट एंड देयर पोटेंशियल इम्पैक्ट ऑन इंडियाज डिजिटल इकोनॉमी. तो वॉट एवर आई एम टेलिंग यू, इट इज बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर पेपर्स एंड ईयर ऑन ईयर वी सी दैट क्वेश्चंस आर कमिंग फ्रॉम दीज एरियाज. और ये 2023 के क्वेश्चंस हैं ये वाले, दीज आर अगेन फ्रॉम द एडिटोरियल्स. What is open network for digital commerce? It was in news at that time and a lot of editorials were covering them. UPI was in news in 2023. A lot of editorials covered this pre-sanctioned credit lines via UPI. So आपको ये याद रखना है, editorials and these reports are very important to answer questions in your descriptive part. और अगर आप ये reports नहीं पढ़ोगे, इस रिपोर्ट में से कोई डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आ गया, यू विल नॉट बी एबल टू राइट इवन अ सिंगल लाइन इफ यू वुड हैव नॉट रेड द रिपोर्ट, बिकॉज दिस इज ऑल बेस्ड ऑन योर नॉलेज. ये कोई ज्ञान देने वाली चीज नहीं है जिसमें आप कुछ भी लिखाओगे. ठीक है, नाउ आफ्टर टेलिंग यू द सिलेबस फॉर फाइनेंस, यू माइट बी सेइंग और थिंकिंग, सर सिलेबस तो पता लग गया बट पढ़ना कैसे है, मतलब क्वेश्चन कैसे आते हैं, डेप्थ क्या है, किस टाइप के आते हैं. डोंट वरी, ये हम चीज़ डिस्कस करेंगे हमारे इस सीरीज के एक वीडियो में, एफ और एफ एम, जहाँ पे मैं आपको डिटेल में बताऊंगा दैट हाउ टू अप्रोच योर एफ एम प्रिपरेशन. अभी हम इसको उतना डिटेल में नहीं जाएंगे कि कॉन्सेप्चुअल पढ़ना है, फैक्चुअल पढ़ना है, कितनी डेप्थ में पढ़ना है, दैट वी विल डिस्कस इन द अपकमिंग वीडियो. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द ईएसआई पार्ट. अब ईएसआई में अगेन इफ आई टेल यू ओवरऑल आउट ऑफ 100 मार्क्स, स्टैटिक का वेटेज वुड बी हार्डली 25% और इवन लेसर देन दैट. करंट का वेटेज इज 75%. इफ आई टॉक अबाउट द रीसेंट पेपर विच वाज हेल्ड, स्टैटिक आई वुड से इज जस्ट 15% एंड करंट इज 85%. So these are the major changes which are happening, that they are going more towards current instead of static. और ESI को ऑब्जेक्टिव 50 मार्क आएगा 100 में से, डिस्क्रिप्टिव 50 मार्क आएगा. ऑब्जेक्टिव में if I talk about static, it is hardly 5 marks. It can even be 0 if you see the latest trends, because current is very much dominating here, 45 to 50 marks. In the descriptive part, they normally ask you one static question and rest of the questions would be current. So objective is mainly current oriented, whereas in descriptive there would be a certain balance where there would be one static question and rest of the one or two static question and rest of the questions as current affairs based.
ठीक है. So सबसे पहले we will see that how to cover this static part. What is the syllabus for this, for both objective and descriptive. So if I talk about ESI static syllabus, so this is the syllabus which is mentioned in the official notification of RBI. They have divided your syllabus into 4 units: growth and development, Indian economy, globalization, and social structure in India. The first 3 units are mainly on economics, and the last unit is on social issues. In the first unit, we discuss about growth and development, as in what are the parameters to measure growth, NNP, GDP, and all that. Then we also discuss about poverty alleviation and employment generation in economy, and how can we do sustainable development. So this is all about growth and development. Then we discuss about Indian economy in unit number 2, where we discuss the economic history of India, how the changes happened in industrial and labor policy of India, how do we frame monetary and fiscal policy, what is their purpose, about economic survey and union budget, financial markets in India, role of RBI in India. So this is about Indian economy. Then we learn about globalization, where we see that how India is related to outside world. How do balance of payments happen, import and export? What are the international economic institutions such as IMF and World Bank which help India become part of the global world? How do regional economic cooperation happen through institutes such as SARC? ठीक है, तो ये सारा कुछ हम ग्लोबलाइजेशन में डिस्कस करते हैं. देन देयर इज सोशल स्ट्रक्चर इन इंडिया, वेयर वी डिस्कस अबाउट द सोशल प्रॉब्लम्स इन आवर इकोनॉमी, सामाजिक समस्याएं, मल्टीकल्चरलिज्म, पीपल लिविंग इन डिफरेंट कल्चर्स इन द सेम कंट्री, डेमोग्राफिक ट्रेंड्स, young population versus old population, urbanization, people migrating to cities and rural areas being left behind without any labor to do farming. So, all these issues, gender equality, social justice, all these issues are being discussed in social structure in India. So, this is the syllabus. Economics can be a bit technical for many, whereas social issues would be simple. But as I told you, paper is more current oriented. Paper is more current oriented. So even if economics is technical, it is of not much concern to you. I mean, if you can remember the current affairs, that's good. So first we will discuss the syllabus for static in objective and syllabus for static in descriptive. ठीक है, तो ये सॉरी हमने यही तो अभी डिस्कस किया स्टैटिक वाला. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द सिलेबस फॉर करंट इन ऑब्जेक्टिव. तो अगर मैं ऑब्जेक्टिव के लिए करंट अफेयर्स का सिलेबस डिस्कस करूं, देयर आर 3 kind of क्वेश्चंस दैट आर आस्क्ड इन योर एग्जाम. गवर्नमेंट स्कीम्स, देन नॉर्मल ईएसआई रिलेटेड करंट अफेयर्स which are kind of mapped to your syllabus, and reports. Government schemes की बात करूं, so they might ask you some common schemes in the area of pension and financial inclusion like Jan Dhan Yojana, or related to Indian agriculture like मत्स्य संपदा योजना, पीएम किसान योजना. एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जैसे कि नेशनल अप्रेंटिसशिप है. स्कीम्स रिलेटेड टू सोशल इश्यूज टू सॉल्व हेल्थ प्रॉब्लम्स जैसे कि भारतीय जन औषधि परियोजना. स्कीम्स रिलेटेड टू विमेन एम्पावरमेंट, गर्ल एम्पावरमेंट जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, स्वधर ग्रे. Education schemes related to education such as post matric scholarship scheme, and just giving you examples. Then schemes in other areas such as scheme related to urbanization, migration, poverty alleviation, जैसे कि मनरेगा can be the one related to poverty alleviation, environment. These can be asked in your exam. Then ESI related current affairs. So there are certain topics in your syllabus such as regional economic cooperation, मॉनेटरी पॉलिसी, इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस. तो अगर WTO की कोई न्यूज़ है, इट कैन बी आस्क्ड इन योर ESI पेपर बिकॉज इट इज़ रिलेटेड टू इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस. अगर सार्क का कोई इवेंट हुआ है, इट कैन बी आस्क्ड बिकॉज दिस इज पार्ट ऑफ रीजनल इकोनॉमिक कॉपरेशन. So any current affairs which is related to these topic or can be mapped to these topics can be asked in your exam. Then there are certain reports, as I told you in your FM paper, reports such as economic survey, union budget, then world development report, world economic outlook. Both of these are very important. Financial stability report, currency and finance report, RBI annual report, reports on trends and progress in banking industry, and reports by World Economic Forum. World Economic Forum की 6 रिपोर्ट आती हैं, जैसे कि ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट इज वन ऑफ देम. ये भी आपको करनी है. Then there are other reports
विच कैन बी मैप टू योर फेस टू सिलेबस. सपोज कीजिए यूनाइटेड नेशंस की जेंडर इक्वालिटी पे रिपोर्ट आ गई. दिस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज जेंडर इक्वालिटी इज पार्ट ऑफ योर सिलेबस. यूनाइटेड नेशन की या किसी और ऑर्गेनाइजेशन की एनवायरनमेंट पे रिपोर्ट आ गई. अगेन दिस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस इज पार्ट ऑफ योर सिलेबस. So any report which can be mapped to your phase 2 syllabus can be asked in your ESI current affairs in the objective part. And this is not random. The way I have mapped it is because if you see, if I talk about health, women, girls, education, health and education can be taken as part of social justice. Schemes mapping to women and girls can be mapped to gender issues. Schemes related to urbanization can be mapped to urbanization and migration here. Poverty is also part of your syllabus here. Environment is also part of your syllabus here. So all these schemes which I mentioned here, they are kind of being mapped to your syllabus. That is why they are being asked in your exam. Even employment generation, this is part of your syllabus here. ठीक है. और मैं आपको क्वेश्चंस भी दिखा देता हूं. ये देखिए, प्रधानमंत्री किसान मंधना योजना. दिस इज रिलेटेड टू इंडियन एग्रीकल्चर, व्हाट आई टोल्ड यू हियर. देन ये पीएम प्रणाम, दिस इज अगेन रिलेटेड टू सम एनवायरमेंट. ठीक है, तो ये एनवायरमेंट भी आपका टॉपिक है. दीज ऑल आर द क्वेश्चंस फ्रॉम योर रियल एग्जाम. So all these schemes which I am telling you are the ones which can be mapped to the syllabus which is given in the notification. तो सिलेबस में स्कीम्स मेंशन नहीं है. स्कीम्स आएंगी बट कौन सी आएंगी? दी वंस विच कैन बी मैप्ड टू योर सिलेबस टॉपिक्स. Similarly, when I talk about ESI current affairs, I mentioned that current affairs related to regional economic cooperation, international economic institutions, again, I have taken it from your syllabus itself. Regional economic cooperation, international economic institutions like IMF, World Bank, WTO, इनकी कोई भी न्यूज आती है, they can ask you current affair question on that. Similarly, when I tell you about these reports, these are mentioned in suggested reference material itself. World Development Report, ठीक है, ये जो मैंने यहाँ पे बताई है. वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, ये वाली इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया, कहाँ गया ये इकोनॉमिक सर्वे. सो ऑल दिस अगेन आई एम मैपिंग बेस्ड ऑन द अंडरस्टैंडिंग एंड व्हाट इज मेंशन्ड इन योर नोटिफिकेशन. ठीक है. Then other reports related to phase 2 syllabus such as gender equality, environment, poverty, migration, urbanization, ये वही चीज है जो मैंने आपको में बताया था. ये रिपोर्ट्स यही जो आपके सिलेबस में है, जेंडर इक्वालिटी, एनवायरमेंट, पॉवर्टी. So like I told you about schemes, similarly if there is any report which can be mapped to your syllabus of what is given in the notification, it can also be asked. But these would be highly important, these would be less important. First priority should be to do these reports because they are kind of directly mentioned in your syllabus. ठीक है. और इसमें से भी मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूं. ये इकोनॉमिक सर्वे से क्वेश्चन आया है ऑब्जेक्टिव में. ये वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक से क्वेश्चन आया है ऑब्जेक्टिव में, जो मैंने यहाँ पे लिखी है. सो दिस इज ऑल बेस्ड ऑन रिसर्च. आई एम टेलिंग यू, पेपर कुछ भी आए बट ये चीज़ें काफ़ी सालों से इंपॉर्टेंट हैं. अब आप जब पेपर दें कुछ भी ना आए इसमें से, दैट्स अ सेपरेट थिंग. एंड व्हाट टू रीड इन ESI करंट अफेयर्स in descriptive part. We discussed about the objective, what to read in the descriptive part. So as I told you in FM, editorials would be one of the focus areas. Apart from that, these reports which I told you to be read for your objective part, all these reports need to be read for your descriptive part also. And I'll show you some questions जो कि इन reports में से आए हैं, बार बार आए हैं. जैसे ये डिस्कस द चैलेंजेस ऑफ यूथ एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, ये इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट से आया है. जो मैंने यहाँ पे बोला है कि जो आपके फेज 2 के टॉपिक्स हैं उन पे ऊपर कोई रिपोर्ट आती है और फेज 2 में टॉपिक में ये है ना, यहाँ पे मैंने दिखाया था आपको, ये एम्प्लॉयमेंट, ये फेज 2 का टॉपिक है. मैंने यहाँ पे लिखा है कि आप इसकी रिपोर्ट कीजिए जो फेज 2 के सिलेबस से मैप होती है. उसमें से ये क्वेश्चन आया है इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट पे. Then rural India needs to give priority to women-led development. ये इकोनॉमिक सर्वे आपका जो मैंने यहाँ मेंशन किया है, ये इकोनॉमिक सर्वे, ये इसमें से डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आया है. इकोनॉमिक सर्वे में ये सोशल एंड इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन पे पूरा आर्टिकल था.
लास्ट ईयर, ये 2023 के क्वेश्चन है, इवन इफ यू टेक देम इनटू अकाउंट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ यूएनडीपी जेंडर इक्वालिटी। अब जेंडर इक्वालिटी की एक रिपोर्ट आई थी यूनाइटेड नेशन की, क्यों एग्जाम में पूछी, एज ए टोल्ड यू, फेज टू सिलेबस से रिलेटेड रिपोर्ट्स। फेज टू सिलेबस से रिलेटेड जेंडर इक्वालिटी आपके सिलेबस में है, उसकी रिपोर्ट करनी है, उसमें से क्वेश्चन आया है। देन करेंसी एंड फाइनेंस रिपोर्ट पे क्वेश्चन आया था, करेंसी एंड फाइनेंस मैंने यहाँ लिखी है, ये लिखी है ना इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स में। सो बहुत रिसर्च करके बनाया है, ठीक है, इसको आप अच्छे से समझो। और अभी भी ईएसआई को लेकर भी आपके दिमाग में यही क्वेश्चन आ रहा होगा दैट व्हाट इज द लेवल ऑफ क्वेश्चंस, व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आता है, तो कुछ तो मैंने आपको टाइप दिखा दिए, बट टू go a level deeper where we will discuss about the level of questions and type of questions, we will discuss about in detail in ESI and English. ठीक है, और अभी हम डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश का डिस्कस करते हैं लास्ट में सिलेबस। सो डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश का ऑफिशियली नोटिफिकेशन में कोई भी सिलेबस नहीं है। व्हाट दे मेंशन्ड इज दैट वी विल एक्सेस योर राइटिंग स्किल्स, बट व्हाट दे वुड चेक इन द राइटिंग स्किल्स, इफ यू सी द प्रीवियस ईयर पेपर्स, एसे, प्रेसियन, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, 3 क्वेश्चन आते हैं आपके। एक ऐसे आएगा, उसमें 4 टॉपिक्स होते हैं, एक पे लिखना होता है। एक प्रेसी आएगी वेयर यू वुड हैव टू समराइज द एंटायर पैसेज इन लेसर वर्ड्स, एंड देयर वुड बी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जिस पे 4 या 5 क्वेश्चन होंगे, आपको वो सारे करने होंगे। जो ऐसे टॉपिक्स हैं जर्नली वो इन्हीं एरियाज पे रहते हैं। जो 4 टॉपिक्स आएंगे, वन ऑफ देम वुड बी ऑन इकोनॉमी, फाइनेंस और मैनेजमेंट, सच एज इकोनॉमी से क्लाइमेट चेंज आ सकता है, फाइनेंस से मर्जर्स एंड एक्विजिशंस आ सकता है, मैनेजमेंट से टीम वर्क आ सकता है, मेंटल हेल्थ अभी आया था, ये भी एक तरह से मैनेजमेंट का ही टॉपिक है। टेक्नोलॉजी और इंटरनेट से सोशल मीडिया पे आ सकता है, बेनिफिट्स ऑफ सोशल मीडिया, एआई पे आ सकता है, सोशल इश्यूज पे विमेन एम्पावरमेंट इज वन ऑफ द टॉपिक, ड्रग अब्यूज, यूथ स्किलिंग, बहुत सारे टॉपिक्स हैं सोशल इश्यूज में, दे कैन आस्क यू। So these are the major areas on which 4 essay topics are asked, और it can be one of the topics can be abstract जो generally समझ नहीं आता है, ठीक है। So only few would be able to write on those topics. तो इंग्लिश का बहुत लिमिटेड सिलेबस है जो ऑफिशियल है, ये भी मैं आपको पास्ट ईयर पेपर्स के बेस पे बता रहा हूँ, बट अंडरस्टैंडिंग द सिलेबस इज जस्ट 10%. Learning how to write an essay, pressy and doing reading comprehension is another 30%. Mainly in English, it's all about practice. If you ask me, 60% is all about practice, where you practice writing essay, pressy and comprehensions. और बहुत सारे यूपीएससी एस्पिरेंट्स अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, दे माइट बी थिंकिंग कि भैया ईएसआई का सिलेबस तो आराम से हो जाएगा, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश में भी ऐसे तो लिख लेंगे। मैं उनको ये बताना चाहूँगा कि सबसे पहले तो एफएम इज समथिंग which is not at all what they have read in their entire UPSC preparation. This is something new. ESI also, as I told you, 75 to 80% it is based on current affairs, and current affairs here are factual. They are not understanding based that you read in UPSC. तो वो current affairs पढ़ के आप ESI भी अच्छा नहीं कर पाएंगे। और आंसर राइटिंग जिस पे आपको शायद काफ़ी कॉन्फिडेंस होगा, यहाँ पे आंसर राइटिंग इज ऑनलाइन विच इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम पेन एंड पेपर बेस्ड, सो यू माइट स्ट्रगल अ लॉट व्हाइल यू स्टार्ट टाइपिंग योर आंसर्स यूजिंग द कीबोर्ड। तो हल्के में मत लीजिएगा। येस, यू माइट हैव एन एज, बट ओनली इफ यू प्रिपेयर वेल एज पर द नीड्स ऑफ दिस एग्जाम. And before I go, I want to tell you that this is the guidebook for RBI Manager. If you are new to RBI, you must download this guidebook. इसमें आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी RBI में, promotions, departments, hierarchy, salary, and apart from that, you will also get previous year papers for RBI in this guidebook. You would also get the detailed decoded syllabus जो मैंने यहाँ बताया है, readable material में आपको यहाँ इस में मिल जाएगा, ठीक है। और बहुत सारी आपको वैल्यू एनहांसमेंट मिलेगी, एंड दिस इज फ्री. यू कैन डाउनलोड दिस बाय गोइंग टू द डिस्क्रिप्शन इन दिस वीडियो, वहां पे लिंक है, इसको डाउनलोड कीजिए 0 फी पर और इसको पढ़िए. दिस विल बी द नेक्स्ट डोज ऑफ मोटिवेशन फॉर यू, एंड दीज आर अवर कोर्सेज फॉर आरबीआई गोल्ड पैक एंड सिल्वर पैक. Gold pack is a comprehensive solution for phase 1, phase 2 and interview, whereas silver pack is mainly for phase 2 and interview. But हाँ, क्योंकि phase 2 के current affairs ही आपको phase 1 में भी help कर देंगे, so you will get current affairs for phase 1 even in the silver pack. But silver pack में you will not get quant, reasoning and English for phase 1. In case you want to become part of EduTab community and want to establish that trust, you can always go to the link
which is in the description of this video. You can download the sample material, get a feel of that. If you feel that you're able to understand and it is comprehensive for your needs, you can always be part of our community. So with that, I take your leave. Thank you. Have a nice day. Bye bye.